वेलकम दिया। और ये अड्डा का सेकंड एडिशन है, नहीं? ये बड़ा नया नया बेबी है अभी हम लोगों का। और कीड़ा था एक, ऑब्वियसली वो यू नो कुछ नया नया करते रहना चाहिए लाइफ में। आई थिंक आई एम श्योर आई विल आल्सो एंड अप आस्किंग यू एंड लॉट ऑफ पीपल मस्ट हैव ऑलरेडी आस्क्ड यू कि भाई आप तो एक्टर हो, तो ये सब क्यों इतना एनवायरनमेंट पर और SDGs एंड ऑल दैट, व्हाई डू यू रियली डू दैट? आई थिंक वही शायद हम सब लोगों की मजबूरियां हैं कि हमें कुछ नए नए कीड़े आते रहते हैं। And also, just to give a small brief background before we start the conversation, the whole idea was also कि हमें ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत silos में काम करते हैं. So we say this is entertainment sector, this is social sector, this is sports, whatever. But ultimately, all of us are human beings, and doing good is a collective responsibility. तो हमें लगा कि हम लोग इन कॉन्वर्सेशंस से थोड़ा वो साइलोस से अलग आएंगे एंड वी विल जस्ट सी दी connectivity in this. So welcome, and the way I did some opening remarks, I'm absolutely open for you also to do some opening remarks to start with. Lovely. I'm very excited about this Adda, Anshu, क्योंकि मैं आपको I think अभी कुछ 15 सालों से जानती हूँ, आपके काम से वाकिफ हूँ, and मैं आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, आपको मानती हूँ, आपके काम को मानती हूँ. And I've had the good fortune of being a part of some of the things that you've done over the years. And I've heard you speak at some of the events that we've shared platform on. And I really respect your passion and your humanity. So thank you for asking me to be a part of this conversation. मैं बहुत खुश हूँ. आपने सही कहा. I think जो ये मेरा काम है एनवायरमेंटलिज्म को लेकर, और एक फितूर सा है टू इम्प्रूव पीपल्स एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, वो इसी बात से जागा अंशु, जब मैंने रियलाइज किया कि जो अच्छा काम कर रहे हैं पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए, साइंटिस्ट, NGOs, फॉरेस्ट रेंजर्स, फॉरेस्ट गार्ड्स, देश भर में और दुनिया भर में जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए रोज जंगलों में जाते हैं. They deal with all kinds of things, not just with threat to life from just the extremities of the natural environment, but also the extremities of threat from poachers and mafias and all kinds of other elements in the wild. मुझे इस बात का एहसास कुछ 15 साल पहले हुआ कि ये जो बहुत ही अच्छा काम हो रहा है ये साइलोज में हो रहा है, और एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस को मेन स्ट्रीम करना बहुत जरूरी है. और अगर मैं एक किस्म की एक सूत्रधार बन सकूं, या एक ब्रिज बन सकूं, एक जरिया बन सकूं इन लोगों को, ये जो साइंस है, ये जो लीडर्स हैं, ये जो एक्टिविस्ट्स हैं, ये जो लोग हैं, हमारे वन रक्षक है जो रोज जाके धरती से जुड़कर काम करते हैं हमारे ही सुरक्षा के लिए, उनको लोगों तक पहुंचाना, अगर मैं उसका वो काम कर सकती हूँ तो कुछ अच्छा कर पाऊंगी लाइफ में. क्योंकि मेरे हिसाब से जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं अंशु, 17 गोल्स हैं, लेकिन उन 17 गोल्स को जोड़ता है एक गोल, वो है क्लाइमेट एक्शन. अगर हम क्लाइमेट एक्शन नहीं अचीव कर पाएंगे, जो पृथ्वी का संतुलन हमने बिगाड़ दिया है, अगर उसको रिस्टोर नहीं करेंगे, उसको ठीक नहीं करेंगे, ये जो बाकी इनइक्वालिटीज है ना, लैक ऑफ एजुकेशन, पॉवर्टी, जेंडर इनजस्टिस, ये जो सारे दूसरे गोल पोस्ट हैं, जो सारे दूसरे गोल्स हैं, वो हम बिल्कुल अचीव नहीं कर पाएंगे. और आई थिंक व्हाट COVID-19 हैज डन is that it has genuinely presented to the world the fact that if we don't act on climate, we cannot survive as a human species, and we are going to be set back in every possible way. नहीं, हम लोग वो जोक करते थे, which is not a joke, which is a reality, कि आप जंगल काटते हो, आप पेड़ काटते हो, जो भी हम लोगों ने सत्यानाश किया है एनवायरनमेंट का, and that is absolutely visible in any case. And then ultimately in the second wave we all were roaming around with a dabba and wanted some oxygen, right? Yeah. I mean, why does this happen? And it's not a joke. It's that really powerful video, Anshu, जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, वीडियो नहीं था, एक्चुअली तस्वीर थी इंसानों की पिंजरों के अंदर. हाँ.
जब और हम वो अपने हुआ घर नहीं में बंद हो पिछले गए 2 साल तब में। हमें एहसास हुआ कि खुले आसमां में रहना, स्वच्छ हवा में सांस लेना, पेड़ जंगलों तक पहुंचना या किसी भी कुदरती हरियाली में रहना कितना संतुलन पहुंचाता है, द काइंड ऑफ पीस एंड हार्मनी एंड बैलेंस इट ब्रिंग्स टू योर लाइफ. एंड आई थिंक द पैंडेमिक ऑल्सो मेड मेनी पीपल रियलाइज कि हम बहुत कम में खुश रह सकते हैं. You know, it kind of और helped us realize that, 4 टीचर्स में जिंदगी चलती है, बहुत मजे से चलती है. yeah, We've actually जब seen that entire stuff. We've seen that. as And long to be as we honest, are मतलब हमने loving हमने अपनी and लाइफ में हमने जो रियलाइज करा कि आप ये जो आप डेली अत्याचार करते हैं अपने हाउस हेल्प पर और लोगों पर कि आपको रोज कोने कोने से गंदगी हटानी है, पोछे लगाने हैं, मतलब वो जो समय था, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान, हमारे से किसी भी इंसान ने 15-15 दिन तक भी घर में पोछे लगाए हो. यू नो, हाँ, हाउ मच डू yeah. वी रियली एक्सप्लॉइट द एंटायर सिस्टम. अच्छा, एक सवाल है दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में इस समय वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी सैड फेज व्हेन वी सी दिस एंटायर इन्वेजन एंड द पिक्चर्स फ्रॉम यूक्रेन. एंड उससे कुछ टाइम पहले हमने तालिबान का देखा था, उससे कुछ पहले हम लोगों ने कोविड में बहुत कुछ देखा वर्ल्ड वाइड जो भी हो रहा था. तो ये जो पूरा पिक्चर्स ऑफ डिस्ट्रेस हैं, ये बहुत सारी हैं. तो मेरे एक मतलब कलीग ही पूछ रहे थे और मैंने सोचा मैं आपसे ये सवाल पूछूं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे 2 दिन से जब से ये सब शुरू हुआ है, मैं बहुत फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं कभी लिखने का शौक रखता हूँ तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, या मैं आई एम नॉट इवन फोकस्ड ऑन से माई ऑन माई ईमेल्स राइट नाउ बिकॉज every time I start, I have those pictures, or I end up looking at some website or something of news site, and every time you see that, you have some picture which is more disturbing. तो हम अक्सर ये मतलब my people also wanted to ask and I also want to ask कि आप लोग जब इस दुनिया में हैं जिसको आप एक्टिंग बोलते हैं, फाइन, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है, आम जनता के लिए तो ये अच्छा या बुरा एक्टिंग हो जाती है, ठीक है, बट जो ये एक्सटर्नल पूरा सब कुछ चल रहा होता है और उसमें आपको कुछ एक अलग जिंदगी जीनी है स्क्रीन पर जिस पर आप टेक रीटेक कर रहे हैं, हाउ डज दिस ऑपरेट, कैसे कंट्रोल होता है ये सब? आई थिंक किसी भी कलाकार का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है उनकी एम्पैथी. तो हम एटलीस्ट मेरे लिए दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, and climate anxiety is a very real thing. You're talking about the war. I dealing with extreme images coming in to me from different parts of the planet and in India, जहाँ पे मुझे पता चलता है कि 60 लाख 60,000 पेड़ कट रहे हैं किसी सड़क के लिए, या ऐसे मतलब खबरें रोज आती रहती हैं. और ऑब्वियसली दिल दिमाग दोनों को स्थिर रखना ऐसे माहौल में बहुत मुश्किल हो जाता है. एंड माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग इज दैट all this conflict, all this pain, all this anger, all this desperation, everything these events around us make us feel are an important part of my journey as an artist. क्योंकि जब तक मेरी इंसानियत जगी रहेगी तब तक मैं अपने कला की ओर कुछ दे पाऊंगी. जिस दिन मेरी इंसानियत मर जाएगी, मतलब मैं उसको अगर दबाने लग जाऊंगी या उसको खत्म कर दूंगी, तो आई वोंट बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू माय आर्ट एट ऑल. एंड क्वाइट फ्रैंकली आई फील दैट एज एक्टर्स we understand how to live in different times and spaces parallelly, because the fact is that, let's leave aside what's happening in the world, there may be a lot happening within our own lives. In very difficult periods of time, we show up to work, we perform parts, we deliver to those jobs, no matter how we are feeling at home or in our hearts, because
the job needs to get done. So I think one of the things that you learn to do as actors is, I wouldn't say compartmentalize, but to use whatever it is that we are feeling, to be able to watch it, to be able to become a witness. There's a very powerful exercise जो हम सीखते हैं थिएटर और एक्टिंग वर्कशॉप्स में, ब्रीद एंड विटनेस, जहाँ पे हमें सांस से काम लेना सिखाया जाता है. So just by altering the way ऐसे जैसे हमारे जब विचार बदलते हैं, हमारी जब सोच बदलते हैं, उसके साथ हमारा ब्रीदिंग पैटर्न ऑल्टर होता है. So when that happens, we can take our mind and our emotions in any direction. So as actors, what we're trained to do is to watch, witness that breathing pattern. And when in time of need, अगर मेरा कोई ऐसा सीन है या कोई ऐसी सर्कमस्टांस है जो शायद लिखने में भी ना नजर आए हो, पर आपको दिखाना है, इमोट करना है, तो through the use of the breath and the understanding of, maybe by just drawing attention to the breath, I can take you in that place, or take myself there and hopefully take you there with me. So it's an interesting paradox that we live with constantly. I don't know whether I'm able to explain this well to you, लेकिन hopefully I have. No, I think you've explained it very well. और मैं इसलिए ये वाला सवाल उठाया, बहुत सोच समझ के सवाल उठाया, क्योंकि बहुत सारे पैरेलल्स हैं. हम लोग जब मैं सोशल सेक्टर को देखता हूँ, और इस 2 साल के अंदर, especially in the pandemic phase, my respect for the social sector has really gone absolutely very high, because हम लोग ट्रेंड नहीं होते हैं किन्हीं चीज़ों में, और इस पेंडेमिक में तो कोई भी ट्रेंड नहीं था. और आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट टाइम when if you are handling grief of someone, normally when a disaster happen, आप सामने वाला grief में है, आप ओवरऑल ठीक ठाक हैं, आप जाके उस grief को हैंडल करते हैं. और यदि आप पेंडेमिक के पूरे फेज को देखेंगे तो उसमें आप खुद भी बहुत ग्रीफ में हैं और फिर किसी और का ग्रीफ हैंडल कर रहे हैं, right? And that is where this question is very important, because I know कि हमारी टीम के लोग, when I say हमारी टीम, I am talking about large number of people in the sector and even beyond the sector, people who were volunteer, right? And the kind of mental trauma they were going through, और वो जो बाहर वो मतलब there were some helplines जिस पे लोग फोन करते थे और कुछ बोलते थे, और इससे पहले कि जवाब दो उधर से आवाज आती थी कि स्टोरी इज ओवर टाइप, कहानी खत्म हुई. और इस बंदे ने तो, ये तो बेचारा वॉलंटियर बन के आ गया था क्योंकि कुछ अच्छा काम करना चाहता था, और वो जो इंसानियत की बात कर रही हो आप, इंसानियत की वजह से आ गया था. एंड द काइंड ऑफ ट्रॉमा ऑल दीज पीपल हैव गॉन थ्रू. तो मैं वही सोच रहा था कि क्यों नहीं आर्टिस्ट और आर्ट वाली जो कम्युनिटी है और जो लोगों के ग्रीफ पे काम करने वाली कम्युनिटी है, why can't two of these communities really work together? But we do, right, Anshu? मुझे याद है कि we do a lot, but more. खूबसूरत कविता भेजी थी मुझे, जिससे मैं जुड़ पाई थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा था to be a part of that, because I think that poem really resonated so deeply with me, and I think it resonated deeply with everybody who watched it. I think उस बात का एहसास हुआ लोगों को कि ये जो लोग सड़क पे चलते हुए जा रहे थे, वो किसी के घर में काम करने वाले लोग थे, किसी के प्लम्बर, किसी के कारपेंटर, किसी के वॉचमैन, किसी के बावर्ची. Everybody was performing duties. You gave the voice to that, and many other friends gave the voice to that. Another friend, Creed, made it. And yeah, I think because वो शायद हम सब लोगों के लिए बहुत ताजी यादें हैं, और हमको कभी भूलनी भी नहीं चाहिए. Because बिल्कुल नहीं. मतलब वो अगर हम वो भूल जाएंगे तो फिर there's no hope. As horrifying, as disturbing, and as terrible as those events were, I hope we never forget. Simply because I just hope it made us better people. I hope it made us respect the people who work with us more. क्योंकि यहाँ पर एक थोड़ा सवाल उठता है दिया, और मुझे लगता है कि उस पर हम में से बहुत सारे लोगों को काम करना है. तो 2 साल पहले जब ये सब हो रहा था, तो when I wrote that small piece, कोविदी लिखने लगा था,
तो उसमें आई बिकेम सडनली वेरी वेरी होपफुल। हम तो सब ऑप्टिमिस्ट लोग हैं, मुझे लगा अब तो सब कुछ बदल जाएगा, पीपल विल रिस्पॉन्ड इन ए बिग वे, पीपल विल टेक केयर ऑफ पीपल। फिर अभी 2 साल बाद डेटा आया, पता लगा कि भाई आधा देश आधी दुनिया तो नीचे चली गई, और हमने स्पेस टूरिज्म इनोवेट किया उस पर्टिकुलर फेज में। वी आर अ पार्ट ऑफ दैट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। या 40 और बिलियनर आ गए। तो जब इस फेज में हम लोग व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एम्पैथी जो आपने बातचीत के शुरू में किया, वो कहाँ है, कितने लोगों में है, एंड आर वी इज अवर बेंचमार्किंग वेरी लो कि हम उस एम्पैथी से खुश हैं, और वी नीड टू मेक सम एडिशनल एफर्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि भाई दिस इज द वे लाइफ शुड बी। मोर पीपल, बिकॉज डूइंग गुड इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सब लोगों को उसका भागीदार होना चाहिए। हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस? मुझे झटका लगा था जब मेरे को ये पता लगा था कि आधे से ज्यादा लोगों ने अपने हाउस हेल्प की पूरी तनख्वाह नहीं दी। तो मैं बड़ा, मेरे सपना टूटने, मतलब ऐसा लगा कि अरे यार, ये तो मैं तो गलत होप लेके बैठ गया था। Anshu, going, I think so many people who lost loved ones because of a lack of oxygen. When there was that statement made in Parliament that no deaths were caused because of a lack of oxygen, none of these people stood up to question that statement. It should have been something that affected the collective conscience of our people, but most necessarily those who were dealing with the grief of losing their loved ones to that situation, right? And I feel ye pata nahi, I think maybe it's because a lot of the narratives are controlled by those who are in power, so many of us who should be heard are not heard, which is why what you're doing is so important. Thank you. But I also think कि ये जो डाइकोटमी है, ये जो मैं भी इसको समझने की कोशिश करते रहती हूँ अंशु, एंड आई फील जस्ट एज befuddled about it as you do, क्योंकि मुझे इनफैक्ट कुछ साल पहले मैं यूएन हेडक्वार्टर्स पे गई हुई थी, एंड वी वर हैविंग अ मीटिंग ऑफ द advocates. हम लोग सब साथ में एक कमरे में थे, and Jeffrey Sachs, who's obviously a great economist, he understands how numbers work. He gave me the understanding that less than 2% of the human population controls the wealth of the planet. Yeah, absolutely. And so that basically means that those people, less than 20 people, are responsible for, less than 1%. So it's less than 20 people who are responsible for the devastation and the destruction of nature and the accelerated climate change that we're experiencing. And my question to the entire team over there was, how tough is it for us to get through to these people? Because if we only succeeded in getting through to these people, imagine the value and the effect that would have on the rest of the human population, the positive impact. Because all we need to do is change these people's hearts, na? We need to make them understand कि आपको बस बदल जाओ, हम सब बच जाएंगे। इतनी सी छोटी सी पॉपुलेशन है, मतलब हम लोग तो डिजास्टर पे काम करते हैं, और हमें हमेशा लगता है कि पीपल हु बिकम हु सफर मोस्ट इन द डिजास्टर, उनका तो डिजास्टर क्रिएट करने में कोई रोल ही नहीं है। करेक्ट, ऑलवेज, बट दैट्स ऑलवेज द केस। अभी कोई भी देख ले, whether it's the frequent flooding, whether it's the forest fires, whether it's the drought, whatever the crises are, whether it's the triple planetary crisis, it's being led by a very small fraction of people who have changed the patterns of consumption and production globally. Just by changing that, सिंपल सा सवाल है ना अंशु, हम बात कर चुके हैं आई थिंक वंस बिफोर, बहुत साल पहले, मैं आपको शायद अभी याद आएगी इस बात। ये जो जब मुझे पता चला कि रेगुलर सैनिटरी नैपकिन्स मोस्टली प्लास्टिक से बनती हैं, तो मेरे मन में एक ही सवाल आया कि इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं ना, इनोवेशन है। तो ये जो सारे बड़े मल्टीनेशनल्स हैं, वो ये क्यों नहीं बना रहे हैं? वो क्यों? Why are they polluting our water, our soil, our air? Why are they making women sick?
क्योंकि ना दिया इनोवेशन तो बहुत सेकेंडरी है, पहली बात तो इंटेंशन है। Correct. And Anshu, ये that's बहुत बड़ी चीज है that ना। is the moral dilemma, that the problem with the construct of capitalism, and I'm not a what do you call it? I'm not against capitalism. I have a problem with conscienceless capitalism. You know, this model of excellence or gain or power that has been created that has a double moral, कि हम आपकी जान ले लेंगे पर इतने लोगों को नौकरी दे देंगे, तो हम जो कर रहे हैं वो भला ही है ना। हाँ, मतलब अंत तो भले से हुआ, क्रिएट कुछ भी किया हमने, अंत तो भले से हुआ। तो जैसे एसडीजी आई नो इज वेरी डियर टू यू, लेकिन बदलाव धीरे धीरे आ रहा है, एटलीस्ट I don't know whether it's कैसे कहते हैं greenwashing, but I hope it's not lip service. I just genuinely pray that the conscience of those in power, the conscience of those who control money globally, has finally been awakened. क्योंकि अगर अब इन 10 सालों में by 2030 इनका अगर conscience shift नहीं होगा, तो I'm not sure whether we'll be able to achieve what we need to. हाँ मुझे लगता है कि लिटिल बिट शिफ्ट, नॉट मच, नॉट द वे, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे लोगों की इंक्लूडिंग मी, देयर वर हाई होप्स जब ये पूरा कोविड का सब I कुछ agree हुआ, with you. Yeah, तो yeah. हमें लगा कि भाई पीपल विल I स्टार्ट would वैल्यूइंग never स्मॉलर imagine that a part of the world would be going to war right now. I mean, Yeah. इतने मैं हमेशा कहती हूँ ना, और भी गम है जमाने में इसके सिवा, मतलब we already have so much to deal with. There's so many problems to solve. Why are we fighting about religion? Why are we fighting over territory? Why are we fighting about gaining power and control? What is wrong with us? It's 2022. I think it's a completely different direction, and many of us will have to learn to be hopeful again. To be honest, Yeah. I think Which खुद is को why देखना my hero is Jane Goodall. मैंने recently उनकी किताब पढ़ी. It's called Hope. और मैं उनको बहुत ज्यादा सुनती हूँ, उनके पॉडकास्ट सुनती हूँ और उनको बहुत फॉलो करती हूँ. वो इतनी, मतलब उनमें इतनी विजडम है, वो सिंपली यही कहती हैं, और जो आई थिंक आप कर रहे हैं अंशु, और किसी एक प्रकार से शायद मैं भी करने की कोशिश कर रही हूँ. अगर हम दुनिया के प्रॉब्लम्स ग्लोबल पर्सपेक्टिव के माध्यम से सोचेंगे, इट्स इम्पोर्टेंट टू बी अवेयर, because like I would not want to be tone deaf, right? If a part of the world has gone to war, I'm not going to attend a party, right? Absolutely. I can't do it. My moral code won't allow me to. But the fact is that, so it's good to be aware, and she says there's nothing wrong with that, and that awareness will and can overwhelm you, as it does most good people. Having said that, what you do need to identify is that as an individual, you have a sphere of influence. You have the individual capacity to bring change. So you get busy in engaging with bringing that change, what you have control over. And you become so actively involved with that. Imagine the power of millions of people all over the world understanding the strength and the merit in doing that. And I feel, Anshu, बहुत लोगों में ना ये समझ आने लगी है, because there's so many people who had very strong, very powerful corporate jobs, who have quit during the pandemic, who've set up their own enterprises now that are focused mainly on delivering social good. Absolutely. And there are more and more organizations that are developing sustainable models, and sustainability not just as a catchphrase, but a genuine end-to-end spectrum delivery, where they're covering 7 SDGs at least in their enterprise, if not more. And more and more people are understanding the power of one. वो जो मजा आ रहा है खासतौर पे यंगस्टर्स को देखते हुए अभी, कि कितने नए खूबसूरत आइडियाज लेके आ रहे हैं. they're not coming up with a solution and then talking about the problem. वो एक्चुअली वो जो अक्सर होता रहा है, ये लोग पहले प्रॉब्लम देखकर फिर अपने सॉल्यूशंस निकाल के आ रहे हैं. तो मतलब मैं तो क्योंकि फॉर्चुनेट, आई एम रियली रियली फॉर्चुनेट टू वर्क विद सो मेनी यंगस्टर्स in their own spaces, and it's so beautiful to see all this happening, and I think that's something which really gives us a lot of hope. तो दिया, ये तो अभी हमने बहुत सारा एनवायरनमेंट पे बात की,
अभी तो हमको जंगल पे भी बात करना है. I know you're passionate about, this, the important life of the other living being too, fine, which is the most important part. But उससे पहले हम लोग ना थोड़ा सा उधर जाते हैं, फिल्मों की तरफ जाते हैं, बिकॉज नहीं तो लोग बोलेंगे कि ये फिर वही वाली बात हो गई है, अब फिर ये सोशल और सोसाइटी सिर्फ बात कर रहे हैं. तो एक तो बहुत खूबसूरत है आपके केस में रिश्ते, और मतलब आई एम सर्टनली अवेयर एज ए फ्रेंड ऑल्सो कि भाई different nationalities as parents, surname different, and then in the married life, a lot of these beautiful things. Any comment on this for the viewers and listeners of this? Well, I think for those who don't know, so that they understand your question a little better, my mother is Bengali, my father was German. I was raised in my stepfather's home, who was Muslim, and I celebrated all festivals. I remember जब मैं छोटी थी स्कूल में कुछ बात उठी थी जहाँ पे people were discussing identity. तो आप कौन हो, आप कौन हो, आप कौन हो. So किसी ने कहा मैं पंजाबी हूँ, किसी ने कहा मैं हिंदू हूँ, किसी ने कहा मैं मुसलमान हूँ, जो भी है. तो मैं घर गई और मैंने अपनी मॉम से पूछा मैं क्या हूँ. तो कहती है अभी तो मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि तुम अच्छे इंसान बन जाओ, और जब तुम्हारी उम्र होगी तो तुम डिसाइड कर लेना कि किसको पूजना है. अभी जिस सबको पूजो, क्योंकि सब इम्पोर्टेंट है, सब इक्वल है. सो I think that was really the wonderful foundation that I grew up with. The understanding of all faiths being equal, respecting all faiths, respecting all cultures. I had the benefit of exposure to, I wouldn't say my home was religious, so to speak, but I think there was a general understanding of, culture and religion and festivals. So we would celebrate Ramzan, Eid, although only Dadi fasted, nobody else fasted in the house. वो पांच टाइम की नमाजी थी, लेकिन बहुत progressive थी. She had very strong political opinions. She was very well read. She never imposed any kind of rules that infringed on my freedoms. And I'm saying this because I think these were very, very important and integral parts of growing up in that home and in that culture. My father was not religious at all, but we celebrated Christmas and Easter, and it was fun. My mother took me to, the Durga Puja. So I remember visiting the pandals, watching, of course, and being a part of all the celebrations, understanding Robindra Sangeet, learning to speak Bengali. It was a very important part of my upbringing. तो ये सब जो है एक मिश्रण था. और आई थिंक मुझे मेरे सरनेम का एहसास तो जब I lost my biological father when I was 9 years old, and I was then raised by my stepfather, who I hate calling my stepfather, but just for everybody else's benefit, for them to understand. And when I joined the Miss India contest, तो मुझे अपना सरनेम उस फॉर्म में लिखना था. तो मैंने अपने स्टेपफादर का सरनेम लिख दिया उसमें. Even though he had not legally adopted me, I just assumed his surname, and he was so deeply touched. It meant so much to him to see me take his name. And I love this about India. Nobody's questioned me about this. So all my legal documentation has Dia Mirza Handrish on it. And yeah, it's absolutely amazing. And beautiful. I mean, that's why I wanted to know. I mean, all the other people to listen about it, because this one, I will not say a rare story, but a very beautiful story. India is full of these beautiful things. Dia is in India, right? So I feel like in so many ways,
my upbringing, my childhood, the construct of my family is such a beautiful reflection of the India that I know we are. And my adult life has also, of course, been quite dramatic, as you know. But what I have always felt, Anshu, and especially because my profession keeps my personal life in the public eye, and there are many things that I know many women feel, and one of them is fear of judgment, fear of rejection, fear of missing out, but most importantly, fear. And I've tried very hard not to allow fear to determine my choices. And I've tried to live as fearlessly and bravely as possible. And I've made choices that have enabled me to be more peaceful, more loving, more generous, and more giving as a human being. And sometimes it's meant that I've had to go away from some relationships, but I've tried to do that also with grace. Great. And and in this life that I'm the stage of life that I'm in right now, I'm very grateful that I get to be the mother of a 12-year-old who's about to be 13. I get to be a mother to my infant baby who was a pandemic baby. um, and I am experiencing a phase of life that has taught me a love that I always knew existed and I wanted to experience it, but I finally get to as a mother, which is the purest form of love, the most beautiful form of love. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो एक हमारी एक आपकी एक फैन है कोई, उसने कुछ आप देखा होगा तो उसने कहा कि आपको ये जरूर पूछना चाहिए कि उनके हाथ में जो टैटू है वो लिखा है आजाद, तो वो क्या है? आजादी भय से, आजादी डर से। तो बहुत आई कांट बिगिन टू टेल यू the freedom that our mind and our heart feels when we become free of fear. It's the most empowering thing. तो मुझे इतनी गहराई से इस बात का एहसास हुआ कुछ साल पहले, मैंने जाके ये अपने रिस्ट पे टैटू करवा लिया, आजाद। लिखा हुआ हिंदी में है पर लगता है उर्दू, कुछ मेरी तरह। और मेरे बेटे का भी नाम मैंने, सेकंड नेम इज आजाद, तो उसका नाम अभियान आजाद है, क्योंकि मेरी उम्मीद यही है कि वो निडर बड़ा हो। तो बड़े प्यारे प्यारे कुछ सवाल भी आ रहे हैं, एंड one immediate question has come from Meenakshi. Meenakshi is also the co-founder. You guys must have met. I don't know. My wife also. Yes, of course. You must have met. तो मीनाक्षी पूछ रही है कि भाई beauty is talked about as a burden and blessing in equal measure. What has been your experience with it in your acting work and social issues related work? You know, I would be very ungrateful if I ever called the blessings I've received as a burden. They have been an obstacle. Yes, I think there's, you know, ये एक कमेंट है जो बहुत लोग बड़े प्राउडली मारते हैं, ब्यूटी विद ब्रेन्स। Why don't they go together? Why is it an aberration? And I'm sorry, it's not a compliment at all when you introduce me as a beauty with brains. It's an insult to every other woman who's beautiful and intelligent, because women are beautiful and intelligent. तो है ना, आपको नहीं लगता है? बहुत सारे लेंसेज में प्रॉब्लम है हमारे। लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे हमारे फ्रेंड। I don't think most people don't even realize, जब वो ये कह रहे हैं उनको लगता है हम बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उसमें छुपी इंसल्ट को नहीं देखते। So for me, I feel my beauty has been an obstacle in sometimes playing parts that I wanted to be in. You know, I remember, actually I've said this before also, Anurag Kashyap is one of my favorite filmmakers. मैं उनको बहुत मैं उनके काम को बहुत सराहती हूँ. I love his work. तो मैंने उनसे एक बार पूछा था कि आप मुझे कास्ट क्यों नहीं करते?
मैं एक्टिंग ठीक ठाक कर लेती हूँ, मुझे कास्ट कर लो प्लीज, आई रियली वांट टू बी इन अ पार्ट ऑफ योर स्टोरी टेलिंग, योर सिनेमा। तो कहता है तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो यार, यू कांट प्ले द पार्ट्स दैट आई मतलब एंड यू मेरा ना you बर्डन एंड got ब्लेसिंग। to the stories that my characters inhabit, the world that my characters inhabit. And maybe that's true, maybe that is, but it's actually quite unfortunate because I think this also forms a part of a large stereotype that if you are a certain skin color you can only represent a certain strata of society. If you look or dress a certain way you can only then be representative of a certain strata of society, and there is something called look the part in filmmaking. So if you don't directly qualify for the part, nobody's going to cast you unless you can really get after the filmmaker and convince them, and maybe do multiple screen tests and ye wo falana dimka. बट वो आई फील थोड़ा बदलने लगा है अभी, आई फील लाइक दैट्स बिगिनिंग टू चेंज अ लिटिल बिट नाउ। हाँ, बट वो टू बी ऑनेस्ट कई बार बहुत सारी चीजों में हम लोग की बेंचमार्किंग इतनी लो हो जाती है कि कुछ भी हो रहा होता है तो हमको अच्छा लगता है। मतलब बहुत स्लो कुछ चीजें मूव कर रही हैं। मुझे भी बहुत खुंदक आती है स्टीरियोटाइपिंग से। जैसे हमारे एक फ्रेंड थे जो अब नहीं रहे, जावेद आबिदी, आप जानती होंगे, बहुत डिसेबिलिटी पे बहुत काम किया उन्होंने। और वो और मैं अक्सर जब भी कभी फोरम में होते थे तो हम लोगों को इस बात का गुस्सा होता था कि इफ यू आर ए पर्सन विद एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो सिर्फ डिसेबिलिटी पे बात करेगा? वो अच्छा इकोनॉमिस्ट क्यों नहीं हो सकता? वो साइंटिस्ट क्यों नहीं हो सकता? वो फन लविंग पर्सन क्यों नहीं हो सकता? या जैसे फेसबुक पे और सोशल मीडिया में आजकल बहुत आता है ना कि द गर्ल हु डज नॉट हैव हु हैज प्रॉब्लम इन विजन इज सिंगिंग वेरी वेल। और आपको लगता है कि इसका क्या रिलेशन है? ये क्यों यहाँ पे हमारे स्टीरियोटाइप है, या इतना हम बिल्कुल साइलोज में भी नहीं देख रहे, मुझे लगता है बहुत डिस्टॉर्टेड तरीके से देख रहे हैं। why can't a person who has certain visual issues you know can become or can be a very very beautiful singer? Why But not? we tend to view, so identity is usually defined by the work that you do, and most people suffer from this crisis because I feel like for those of us who have many facets to our personality, who have the ability or the interest to explore various aspects of life, and make it all an equally important part of our journey. So I paint, I do pottery, I can sing, I can play the piano. I'm just saying, giving you an example. But I also, I'm an actor, I'm a mother, I'm a daughter, I run a production company, I'm an advocate. There are so many aspects to the individual, right? And not one defines you completely. All of these things define who you are. And I feel that people, whether it is with disability, is a part of you. It is not your identity. Absolutely. And that is something that really needs to change. तो ये इस सवाल का जवाब कितनी बार दिया कि अच्छी भली एक्टर हो तो ये क्या जंगल और एनवायरनमेंट और एसडीजी पे बात करते रहते हो? हाउ मेनी टाइम्स हैव यू आंसर्ड दिस? बहुत बार, और मुझे बहुत वाहियात सवाल लगता है ये। मैं इतना गुस्से में आती हूँ जब मुझे ये सवाल पूछा जाता है, क्योंकि बहुत रेगुलरली पहले पूछा जाता था, अब तो समझ गए सब कि मैं पागल हूँ और मैं इससे क्यों जुड़ी हुई हूँ। आई थिंक मोर पीपल अंडरस्टैंड नाउ। ये मेरा पर्सनल पैशन है। मैं नहीं मानती कि मैं अपने बच्चों के लिए एक सलामत दुनिया छोड़ जाऊंगी अगर इस एरिया पे मैं काम नहीं करूंगी। आई एक्सप्लेन टू यू दैट climate action is connected to everything else. If we don't leave a healthy planet for our children, what are we leaving for them? अगर उनको पीने को पानी नहीं रहा, उनके पास धरती नहीं बची जिसमें वो खेती कर सकें, you don't leave fertile healthy soils, you don't leave clean air for them to breathe, you don't leave an ecological system that sustains life, what are you leaving your children? Yeah, and what about why only the next generation? My question to large number of people is also that even
even we are facing the same. Even we have a lot to course live. we are. No, You this know? is not even about the Yeah. future. It's about the present Not moment. It's present. about right now. And I'm talking about, when I'm talking about healthy air, healthy soil, healthy water, healthy planet, I mean right now, Anshu. अभी Yeah. नया जो लेटेस्ट आईपीसीसी रिपोर्ट है, Hmm. इंटरप्लैनेटरी Yeah. क्लाइमेट रिपोर्ट, वो कुछ दिनों में रिलीज होने वाला है. उसके उसके कुछ हाइलाइट्स मुझे मिली हैं because of the work I do with the UN. It's All not good. alarming. Yeah. It's not Every good at single sentence is alarming. Literally, every single everything, sentence. Everything. everything, right? So which is why I'm baffled. मुझे समझ में ही नहीं आता कि how and why hasn't the climate agenda become the most important and most urgent agenda for all people everywhere. हाँ, हम लोग, you have been an advocate for SDGs, and we also, some of these social entrepreneurs and some fellows of Schwab, Ashoka, and many other school and all, we created a group called Catalyst, and the Catalyst 2030, and the whole idea is that how do you really chase these SDGs, or how do you create an atmosphere of doing it in a much better way? And it looks so far away because there are some people who are trying to do it, Yeah. and there are more people who are not into it. For them it's just one agenda, but we are not working towards that. वो रोज उससे दूर होते चले जा रहे हैं. And ऐसा नहीं है कि वो अचीवेबल नहीं है. यदि हम लगेंगे is. तो अचीव किए जा सकते हैं. मतलब even if we achieve a part of it, it's not that it cannot happen. Acha, you told me that you also had a couple of questions. So if you have those questions, I actually have lots of questions, Anshu. But you've actually asked me a lot of the questions that I would have wanted to ask you, but I will ask you anyway. Although मुझे लगता है कि आपका जवाब मुझसे शायद थोड़ा मिलता जुलता ही होगा. लेकिन ये जिस तरह का काम आप करते हैं और जिस तरह से आप ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को इतनी नजदीकी से, इतनी करीबी से देखते हैं, how do you cope with that, Anshu? How do you wake up every day? I know that the work that you do must give you a lot of strength, but it must be very tough. कैसे करते हैं आप? तो मुझे लगता है बहुत टफ है for sure, and then you become used to of it and somehow you settle down. But if I tell you the initial phase, बिल्कुल शुरू का मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरा तो मतलब इस सेक्टर से, या हमने दुनिया को इतने करीब से देखा नहीं था. भाई आप एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिलीज में पले बड़े हो तो ठीक ठाक सब कुछ था. बट आई रिमेंबर व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल, एंड स्पेशली जब थोड़ा बाई एयर वगैरह ट्रैवल करने लगे, और बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, बहुत सारे हम रिमोट गाँव में जाते थे. तो आई स्टिल रिमेंबर कि एयरपोर्ट तक फिर भी थोड़ा ठीक होता था. 1.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर आप दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच जाते थे, या दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते थे. उसके बाद से अगले कई दिन मेरे कंप्लीट साइलेंस के होते थे. मतलब मैं घर में मिनी से, उर्वी से बात नहीं करता था. ऑफिस में कम लोग थे, उनसे बात नहीं करता था. एंड इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी टू अंडरस्टैंड दैट रियलिटी कि ये 1.5 घंटे की डिस्टेंस पर ये रियलिटीज हैं. चलिए अब तो थोड़ा टाइम हो गया है, तो आप कुछ देख पाए हैं दुनिया को अलग नजरिए से. तो और यह डिजास्टर में जब हम लोग जाते हैं और आप डेली डिस्ट्रेस देखते हैं, डेड बॉडीज देखते हैं, डिग्निटी पे बहुत सारी चोट देखते हैं. हम लोगों के लिए डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है. गूंज के काम में तो यू नो इट वेरी वेल. तो बड़ा शाम को आके फिर आपको एक बार झटका देना पड़ता है अपने आप को. एंड देन आई रिमेंबर माई फादर हु इज नो मोर. पापा का जब भी कभी इस तरह के क्राइसिस से निकला करते थे, इस तरह के नहीं, मतलब लाइफ में कुछ भी होता था, तो एक लेवल पर आकर वो जोर से बोलते थे लीव इट, और उसके बाद वो शिफ्ट करते थे. बट मोर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ इज दैट आई थिंक हमारे पास एक पर्पस है. दैट गिव्स अस एनर्जी. तो हमको उस वहां दुख पे दुखी तो हम होंगे, लेकिन हमको ये भी मालूम है कि इवन इफ दिस मच we have that purpose, we can reach that family, that area, that community tomorrow, and do a little bit जो भी हम कर सकते हैं. हम खाली दुखी होके या रोके रह जाएंगे ऐसा नहीं है, because that's not a part of our purpose. Our purpose is much larger. I think that just
that just keeps us awake. That just make The sure that work, we the are work on. keeps us sane. We work in the purpose. Yeah. Work. Hey, I mean, the work is the purpose. What is the purpose? They're not Absolutely. separate. बहुत लोग बीच में बोलते हैं ना कि नहीं अंशु, ये तुमको तो थोड़ा सा और एंटरटेनमेंट के लिए ये करना चाहिए, बैडमिंटन खेलना चाहिए कि नहीं। मैंने कहा नहीं, हाँ बिल्कुल खेलना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, बट मुझे कभी बहुत बार ऐसी जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि आप इसी को जीते हो और आप इसको मजे से जीते हो। ऐसा नहीं कि आपने इसको अपने ऊपर भार बनाया हुआ है। And large number of people do that. I mean, how do you see the medical fraternity or the jawans, Yeah. really? और या जो रोज मैं कहता हूँ जो घरों का कचरा भी उठाने आता है, वो कैसे उस माहौल में अपने को जिंदा रखता है, अगले दिन फिर उसी काम को करने आ जाता है। तो आई थिंक इसका पर्पस है। वंस यू स्टार्ट लविंग योर पर्पस, it's a little bit easy to handle, I would say. So true. I couldn't agree more with you. And I think a lot of young people who are doing good work are understanding that very well now. That the only way you can deal with the trauma of witnessing inequality, death, strife, crisis is by becoming a part of the solution. There's one more thing I've always wanted to ask you. कोई ऐसा इंसिडेंट था, कोई वाक्य था, कुछ आपके साथ हुआ, कुछ आपने देखा that led you in this direction, that made you discover your purpose, Anshu? I mean, we all have our moments, right? Aha moments. Oh, this is why I think I was born, to be able to do this. तो मतलब जैसे गूंज का स्टोरी तो कपड़े से शुरू हुआ और अभी भी बहुत हद तक मतलब ठीक है। नाउ वी आर आल्सो डूइंग अ लॉट इन द विलेज एंड मेकिंग रोड्स, डिगिंग वेल्स, ऑल काइंड ऑफ थिंग, एज अ पार्ट ऑफ दैट बार्टर इकोनॉमी कॉन्सेप्ट। और कपड़े की कहानी मुझे ऑल्दो बहुत सारे लोगों ने पहले सुनी भी होगी, क्योंकि वही कहानी है, वही रिपीट होती है बार बार। एक तो उत्तराखंड में मेरे मास कम्युनिकेशन के दिनों में जब क्लासेस बंक करके मैं वहाँ गया था और पहली बार जिंदगी में डिजास्टर और गांव देखे, और ये देखा कि अर्थक्वेक था वहाँ पर, देयर वाज अ मैसिव अर्थक्वेक इन उत्तरकाशी। तो आई जस्ट गॉन देयर नॉट एज अ रिलीफ वर्कर और व्हाटएवर, जस्ट एज अ क्यूरियस स्टूडेंट, और मे बी क्योंकि वो थोड़ा कीड़ा था कैमरा लेके घूमने का, तो उस वजह से चला गया था। तब आपने ये देखा कि किस तरीके से ट्रकों से लोग उछाल के पुराना कपड़ा पहाड़ के बड़े ऊंचे माथे वाले लोगों को दे रहे थे, और वो उनके चेहरे को जब आप देख रहे थे, या बाद में सुबह जब चाय की दुकानों पे बात होती थी, छोटी छोटी जो गुमटी होती हैं, तो उसमें लगता था कि डिग्निटी पे कितनी बड़ी चोट हुई है। और या वहां पर एक इंसान से मिलना जिसने बहुत सारे पैचेस के साथ में, दिस गाय वाज वेयरिंग ए जैकेट मेड आउट ऑफ ओल्ड जूट बैग्स, एंड देन ही वाज सेइंग अगेन एंड अगेन कि मुझे गर्म कपड़ा दे दो, मर जाऊंगा, एंड आई वाज नॉट एबल टू रिलेट। And then in the night I realized that what is this cold all about, क्योंकि उससे पहले आप सेफ घरों में हैं, आप तो कभी टेंट में इस तरह से सोए नहीं है, तो आपको पता नहीं था। And the other incident which I think I'm sure you know, or you must have heard about Habib Bhai, who used to pick up unclaimed dead bodies from the roads of Delhi. Yeah, this is such a powerful story. My God. Little daughter said कि जब मुझे ठंड लगती है तो मैं लाश के साथ चिपक कर सो जाती हूँ, और आपको समझ नहीं आया कि भाई ये भी कोई रियलिटी हो सकती है क्या। तो बस वो वहां से कपड़े पे कहानी शुरू हुई, एंड टू बी ऑनेस्ट इस तरह से कोई मूवमेंट जैसा बन जाएगा, या थोड़ा अलग अलग कीड़े निकलेंगे, नई नई चीजें निकलेंगी, वो सब तो इवॉल्व होता है वक्त के साथ। आई थिंक इफ वी कीप वर्किंग ऑन अवर पोटेंशियल एंड अपने आंखें खुली रखें, लोगों से सुनते रहें, सीखते रहें, तो मुझे लगता है बहुत कुछ किया जा सकता है। अभी तो शुरुआत ही है एक तरह से। Amazing. I never, every time you share the Habib Bhai story ना, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। I can never get over that. And it's such a, अभी भी ठंड पड़ जाती है ना, अंशु, न्यूज में आता है कि one of the strongest winters, one of the most severe cold waves in the north. I always think of this story because suddenly I see the image of real people trying to find warmth in some way or the other. And I don't think I would have ever consciously thought of that if you hadn't shared this story with me. So thank you for बहुत बड़े हो गए क्राइसिस ना, बिकॉज
जब Yeah. आधा दुनिया फिर पॉवर्टी की तरफ चली गई है, तो Yeah. ये जो नीड्स विच वर नेवर कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट Yeah. बट वर इम्पोर्टेंट और आर इम्पोर्टेंट, वो तो और ज्यादा इग्नोर हो गई है. मे बी दैट इज द रीजन दैट मेनी ऑफ अस नीड टू वर्क a lot on these issues. So there, before we close in the next, next 5, 6, 7 minutes, एक बार दोबारा से फिल्मों की तरफ जाते हैं, because नहीं तो आपने लास्ट टाइम फिल्में कहा, लेकिन you didn't ask me a filmy question at all. I'm just reminding. फिल्में का मेरी प्रॉब्लम तो ये हो गई है कि मैंने तो पिछले बहुत साल से फिल्में देखी नहीं है, गाने नहीं सुने, तो मेरे लिए तो ये बहुत, मतलब ये जो नया जो मुझे कीड़ा चढ़ा है ये वाला, मेरे लिए तो बड़ा खूबसूरत है, बिकॉज मैं तो अब डिस्कवर कर पा रहा हूँ बहुत सारी चीजें. Yeah, जो मैं बहुत अलग you're अलग हो गया. reintroducing yourself to things that you had forgotten about. हाँ, कि भाई कभी कोई जर्नलिज्म की भी पढ़ाई की थी, वो सब भूल गया था मैं, तो मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है ये करने में. आई थिंक I'll take couple of months to be a little bit knowledgeable about films and all that. But the most important question which I obviously ask people is about their any memorable dialogue or role, and why do you remember that? I've been working for 20 years, Anshu, or until about 2.5, 3 years ago, I felt very unfulfilled as an artist. मुझे हमेशा लगता था कि मेरी जो पोटेंशियल है उसे ठीक से टैप किसी ने किया नहीं. अभी तक तो मुझे किसी ने ऐसा कोई काम नहीं दिया. Of course, I was very lucky that some of my films are very popular. लोग मुझे मेरे कैरेक्टर्स के नाम से बुलाते हैं. रहना है तेरे दिल में, my first film is like a cult film, and all that is wonderful. But I always felt very cheated. And I share this story with you because I know lots of people feel that way about certain things that they really care about. You work very hard, you spend most of your life doing it. You don't feel like you're getting the real opportunity to really break through, to really make that big inroad, to really like make that soul connection. And unlike social good, acting is a very selfish job. So फाइनली मेरे लाइफ में एक कहानी आई, काफिर, जो एक OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई एंड इन 2019. एंड उसके लिए जब मैंने काम किया, मुझे फाइनली इतने सालों बाद ऐसा लगा कि कुछ ऐसा करने को मिला है जिसको मैं अपना सब कुछ दे सकूं. And we worked in very extreme environments and temperatures. We worked in very difficult conditions, and we did it with absolute love and joy. And we're able to tell a story that I think is very relevant. It's a story about a Pakistani woman who ends up in an Indian prison and has a baby while she's in prison. And a journalist happens to question where this child is from and how did she, why is a child going from jail to school. And then he discovers that she's the daughter of this Pakistani prisoner. And it's her story. वो कैसे हमारे जेल में पहुंची, क्यों पहुंची, उसका बच्चा कैसे होता है, और कैसे इस केस को लड़ने के बाद उसे वापस अपने मुल्क जाने का मौका मिलता है. It's a very beautifully, very sensitively, very bravely told story, and I'm very proud of it. I feel like उसकी जो narrative themes हैं वो इतने relevant हैं हम सब के लिए इस वक्त, especially आज के जो माहौल में हम जी रहे हैं उसके लिए. And उसमें एक बहुत खूबसूरत डायलॉग है, अंशु, जो मैंने I wrote it myself because I was sitting there and we were shooting the scene. And रोज जब मैं जेल की सलाखों से खुले आसमां को और परिंदे को देखा करती थी, तो मुझे वही खुला आसमां और परिंदा नजर आते थे जो मेरे मुल्क में भी है. Wow. So did you write
many more dialogues? Did you write some of them? Sometimes I got the opportunity to experience something and then express it. We as artists do it all the time. Of course, we never take credit for dialogue because it's not the right thing to do. But yes, whenever I felt, and the writer of the show is one of the most generous, most beautiful human beings and artists. Her name is Bhavani Iyer. She's written some absolutely fantastic work and stories, and the director also was very generous, so she gave me the space and the room to really connect and live the part. And I think sometimes these lines are born out of that real life experience when you actually take yourself to that place. What was it for this woman to spend 17 years of her life? She was so young when she got washed ashore onto the Indian side, and what it must have been for her to wake up every day in that prison and deal with life. And that's a true story for large number of people in the prisons. मतलब बड़ा दुख होता है वो सारे डेटा देख के और समझ के I कि recently saw a story on 30 साल से पढ़े। I saw a recent story on change.org where a very young boy, little boy, he was playing and he crossed the Indian side, and he's been in juvenile lockup for the last 3 months, and the parents are desperate to take the child back home. So yeah, it's very unfortunate. It's horrible. It's really horrible. तो दिया हमारा तो ये सीरीज जारी रहेगा, एंड ऑफ कोर्स मैं तो दोबारा कहूंगा आपको आने के जब मैं थोड़ा वेल इन्फॉर्म्ड हो जाऊंगा, थोड़ा सा सीजन्ड हो जाऊंगा कुछ चीजों में, तो देन वी नीड टू टॉक मोर अबाउट द फिल्म्स एंड ऑल दैट. बट एक खूबसूरत चीज कहीं पे देख रहे थे कि 80s को बड़ा याद करती हो. हाँ, ऑब्वियसली. तो वो क्या था थोड़ा, क्योंकि वो जो हमारे आज के बहुत सारे वॉलंटियर्स होते हैं, दोस्त होते हैं, कीड़े वाले लोग होते हैं, आपके भी बहुत सारे फैन होंगे यहाँ पर, उन सब के लिए वो बड़ा मतलब अभी जब हम थोड़ा सा यहाँ से उठ के मुजफ्फरपुर, पटना या इवन देहरादून जाते हैं, तब तो हमें पेन ड्राइव में वो पूरे वाले सारे गाने सुनने को मिलते हैं, वरना वो गाने वाने सब काफी गायब हो चुके हैं. तो वो बिफोर वी एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि वो जो 80s की जो यादें हैं वो क्या है, क्यों याद है? सिंपल ना अंशु, कितना अलग था समय ही, कितना अलग था. मतलब देयर वाज नो मोबाइल फोन, देयर वाज नो इंटरनेट, हम लोग वो लैंडलाइन से लोगों को फोन करते थे. ये जो इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं मार्केट में हमारे कंज्यूमरिज्म के लिए, हमारे कंजम्पशन के लिए, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी. हम आकाशवाणी और क्या था वो सुरभि देखते थे, you remember सिद्धार्थ कार्क एंड रेणुका शाहने. we used to listen. मेरा तो एक्सीडेंट ही चित्रहार के चक्कर में हुआ. टॉप 20. और फिर ऑफ कोर्स दैट टाइम ऑफ Amir Khan, Salman Khan and Shah Rukh Khan all making their respective debuts, and the cult following they had, which has grown with time. सिनेमा हॉल में जाके इन फिल्मों को देखना, इनके गाने बार बार गाना, it was a really different time. And 80s का मैजिक कुछ और ही है. But I think we were also a generation that really witnessed very, very exponential and fast change, and we learned to adapt to it. You know, I don't think we give ourselves credit enough for how much we have adapted to very quickly, because the world changed so fast around us, so fast, so rapidly. कहने के लिए तो मतलब from no cell phone to cell phone, या तो पेजर्स होते थे उसके पहले, और फिर not having internet to suddenly having laptops and computers. आपके हॉस्टल में फोन है लेकिन आपके घर में नहीं. हाँ, मतलब ट्रंक कॉल्स करने जाते थे हम लोग, वो फोन बूथ पे उसको 10 मिनट के 150 रुपए, उसको पैसे कलेक्ट करने पड़ते थे to do trunk calls. just a few years back, मतलब ऐसा तो हमारे यहाँ ना एक हम लोगों ने गूंज में एक म्यूजियम ऑफ वेस्ट करके क्रिएट किया है, ओके, और वो एक्चुअली वेस्ट नहीं है, बट आई मीन द फैक्ट रिमेन्स कि इवन फ्लॉपी ड्राइव राइट नाउ, the other day our daughter asked us, what's a twin one? या वो दूध के बड़े वाले बर्तन, वो अचार के बोट,
you know. अंशु, बेटी पूछती है 2-in-1 क्या था? CD player क्या है? Imagine. The concept doesn't, like, they don't know. अभी हम लोग recently we got these LPs, you know, these old record players. तो 80s के गाने, बहुत सारे 80s के फिल्म और उसके पहले भी. And my husband loves old things, so actually he's like this person who's constantly trying to restore and save things, so he keeps finding these things. So LP player उठा के लाया वो घर पे. You should have seen our daughter. She was like, what is this? Lovely, so beautiful. Although there are a lot of people who want you to sing also. If you sing, we can end with a song. If No, you don't, please. I don't know do that it. you have some great singers who've been a part of your Adda, and they're beautiful human beings who are my friends. I'm not a singer. I can't sing. Please don't ask me to sing. Good, you are telling people, you know, because मेरी बात पे तो विश्वास नहीं होता यदि मैं ये बात बोलता. I will So, just leave everybody with one thought, which is again a dialogue from the same show. कि कुदरत तो लकीरें नहीं बनाता, इंसान बनाते हैं. उम्मीद यही है कि एक ऐसा दिन आएगा जब ये सारी जो हम लकीरें हमने जो उतारी हैं वो मिट जाएंगी और हम सबको एहसास होएगा कि हम सब एक हैं. wow, what a lovely, and such a beautiful conversation. We'll talk more. Wishing you the I'm best. forward to talking to you again soon. Thank you so much for all the good you do, Anshu, and thank you to all your volunteers, your entire team. I'm so grateful that you're spread across the country now. More power, more strength, more grace, more dignity, more love to all of your people, and may you continue to do the amazing work that you do. Thank you so much for having me. For all the blessing. Thank you so much.